Let's just cut across to Asaduddin Owaisi of the AIMIM, who's addressing a news conference. राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना, जाके आप ट्राइब्यूनल में जाइए, आप जो सेक्शन 83 है वक्फ ट्राइब्यूनल में जाइए। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है, और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, तीसरा ये है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। नहीं, सुनिए, ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का, और यूपी सरकार ये काम कर रही है। जो लोग बोल रहे थे कि हो बाबरी मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोल रहे थे गिव एंड टेक कर लो, अब करो बात। जो बोल रहे थे गिव एंड टेक कर लो, अब आप क्लैरिफाई करो इस पर क्या बोलेंगे आप। सुनिए, नहीं, अरे बाबरी मस्जिद के वक्त भी ऐसे बहुत बड़े दानिश्वर लोग थे, आज भी हैं। ज्ञानवापी के वक्त भी अब बोल रहे हैं गिव एंड टेक कर लो। अबे क्या गिव एंड टेक करेंगे बताइए आप। एक प्रॉपर्टी वक्फ रजिस्टर हो चुकी है, और अगर नहीं भी है तो वक्फ बाय यूजर है। अगर मैं एक जगह पर नमाज पढ़ रहा हूं, ईदगाह है, कब्रस्तान है, तो वक्फ बाय यूजर है, वो स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता। अब सरकार आकर बोलेगी नहीं ये वक्फ नहीं, हम छीन लेंगे। आप कैसे छीनेंगे? आप वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 83 है, वक्फ ट्राइब्यूनल को जाइए, आपका इंटेंशन ये है वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लेना। और अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एंक्रोच करा है, कोई काबिज है, तो भाई सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, सरकार उनकी मदद क्यों नहीं कर रही है? और सर्वे आप करा रहे हैं तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का भी सर्वे कराइए ना, मठों का कराइए। ये एक सिलेक्टिव टारगेटिंग है एक समुदाय की, कि इनको बस तंग करते रहो, इनको सुकून से रहने मत दो, और ऊपर से बड़ी बातें करते हैं आप। ये 89 का क्या मतलब है बताइए? 89 का डेट कैसा लेके आ रहा है आप? सर, आप कह रहे हैं कि छीनने वक्फ बोर्ड की जमीनें या प्रॉपर्टी छीनने की बात हो रही है। अभी तो सर्वे हो रहा है सर, छीनने की बात नहीं हो रही है, नंबर 1। दूसरा, अगर 89 के तहत 89 के कानून या जो भी है उसके तहत अगर दी गई है प्रॉपर्टी, तो उसका सर्वे में क्या दिक्कत है? सरकार अगर किसी मद के लिए फंड भी जारी करती है तो उसका एडिट कराती है कुछ दिनों बाद कि इसका सही इस्तेमाल हुआ, बेजा इस्तेमाल हुआ, सही इस्तेमाल हुआ, क्या हो। तो सर्वे में क्या दिक्कत है? पहला सवाल क्या था आपका? बोलिए, भूल गया। सर्वे क्यों होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि छीनने के लिए सर्वे हो। हाँ, अभी तो सर्वे एक बार सुनिए, वो जो systematic targeting of Muslims. That's what Asaduddin Owaisi there going on to say, even as this survey has just about begun. But is this nothing but a bid to block transparency? That's something that we're asking here on CNN News 18. And to discuss that with us is political analyst Desh, Ratan, Nigam on this broadcast. Muslim scholar Maulana Masoodul Hasan Qasmi also joins us on this broadcast. And Maulana Qasmi, I'd like to begin with you. What is the problem? Survey ही हो रहा है बस। Asaduddin Owaisi कह रहे हैं कि हड़प लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, बट ये अगर किसी ने हड़प लिया है तो उसकी जांच होगी, तो उसका ऑडिट होगा, एंड देन इट विल बी गिवन टू द राइटफुल ओनर। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? No, survey, no. We don't have any objection to the survey. I am not advocate of the Asaduddin Owaisi. I personally can say that the survey can be done. And the government, a lot of waqf properties have been encroached by the government, also by other agencies, even by Muslims. So let the truth out. Who has the encroacher? Who has grabbed the waqf land? Who has not? But when you are saying then you are going to cancel 1989's order, in which the order was issued to properly register such properties in revenue records. So what is the need? What is the need to cancel that order?
So the work properties should be surveyed properly, Right. and it should come out. Right, so you're saying Who is that the the- survey really is not the problem. The manner in which they've done this by striking down that law, that really is a concern. And Asaduddin Nigam, you're a lawyer as well, so put that in perspective for our viewers, really, because many would say that the Waqf Act in itself and the way land is decided to be handed over to the Waqf or not, that in itself is questionable. Yes, in fact, I'm rather surprised, shocked. How come in a secular country, Waqf Act is created by an act of the legislature, either it is State Assembly or the Parliament. The Waqf Act of 1995 has been passed by the Parliament, whereas 1960 Act is of UP, and there are various other acts of the state governments as well. And in a secular country, based on the religion, you give these lands and an authority over these lands by an act of Parliament. Being a secular country, this itself is unconstitutional and illegal, and that aspect is under challenge in Supreme Court. Now, secondly, even in the 1989 order, most of these lands belong to panchayat, municipal bodies and other local bodies, and the nature and the management of these lands cannot be changed. It is prohibited. Despite that, they have been given to the Waqf Board in the 1989 order, and a lot of properties have been illegally taken over by Waqf by simply passing an order, because these are such draconian laws. Today, even my and your property may be suddenly declared as a Waqf property, and then you keep on running to the courts. And these are very stringent acts. How this has been done by the various Congress governments or the governments who were there, it's rather very shocking and surprising. Probably it was done underhand. Not much publicity was given. It was done very quietly. Even the Parliamentary Act was passed without even giving minimum 7 days notice for discussion. So the way it has been done, it appears there is a lot of political motive and a motive which cannot be sustained in law. And therefore, a lot of properties have been illegally possessed by these Waqf boards, and many of the victims are coming out of it now. And that is where it has to be stopped. And why I'm rather surprised is why these surveys are being opposed. Right. Surveys are there to, bring transparency, as you said, and also to find out any illegalities which have been done. So entire survey has to be done, codified, and in revenue records, it have to be identified whether the nature of the properties have been changed, which could not have been changed, whether it was Waqf Act or the order of 1989. Right. Therefore, very clear, such kind of investigation, scrutiny, and reports have to be prepared, and then only the next stage of action will come. Absolutely. And once those facts are out, we would know where it really lies. There is a possibility that everything is above board, and there's a possibility that a lot of it isn't. And if it isn't, then rectification of that is extremely important. That's exactly what the Yogi Adityanath government is trying to do. I request you both gentlemen to stay on with us, because this has triggered a massive political fight as well. Listen in to how the BJP is actually defending why there is a need for such a survey to be conducted. अखिलेश ने अभी कहा है we asked him upon the survey issues, ongoing madrasa survey and the waqf board survey. नहीं, देखिए अखिलेश जी को सर्वे से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सांप्रदायिक राजनीति के वो एक वो भी राजनेता है, तो इसलिए वो उस दिशा में काम कह रहे हैं। मगर सर्वे करने से लोगों को और वहाँ पे जो सहूलियतें हैं वो सहूलियतें सबको मिलेंगी, तो उसका स्वागत करना चाहिए, ना ही विरोध करना चाहिए। कांग्रेस की जब सरकार थी 89-88 में, उन्होंने उस वक्त प्रॉपर्टी का कह दिया था जहां आपने कब्जा कर लिया वो आपका हो गया, और जिसका भी कब्जा किया वो प्रूव करेगा ये मेरी जगह है, वक्त तो नहीं प्रूव करना है। तो ये इस तरह से उन लोगों ने कब्जा करना शुरू किया और हत्याना शुरू करा, उसको रोका गया है। उस लॉ को चेंज करते हुए उसको अब बेहतर किया गया है। कि जितने भी मदरसे के संचालक हैं और जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, सबने इसको सराहना की है कि इसको होने से हम लोग रेगुलराइज होंगे और बच्चों को पढ़ाई करने के और अवसर मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, और सरकार पूरी तरह से प्रदेश के सभी बच्चों की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, उनके पास न नीति न एजेंडा